Hello, am I audible? Am I audible to everyone? Please reply me so that we can start. Hello. Someone please reply me whether I am audible or not. Am I? Yes. Thank you, Rinku. So how many of you are the first time joiner? See, last time we don't have a GR, but currently we are having a GR that you have to appear for the examination. So from that point of view, our lab is also ready. So let's start with some more functions today. These are the accounting functions. So more important from your point of view. Today we will discuss some accounting functions. See, first we will discuss the count function. If everything is clear, the screen visibility and voice. Okay, thank you, Sukanya. Guys, please reply me. See, our first function is count. Okay. So now, this is count function. This is actually the attendance sheet. This is attendance sheet of the persons named in the first column. This is 31 days attendance. This is 31 days attendance actually. So please enter at least 1 or 2 records so that I can show you how to take count and count if.
Okay. So this is the attendance sheet of the person's name. Now we are using the count function. What exactly the count does is, see, now we want to calculate the total number of the attended days, present days and the absent days. Okay. So already we discussed the if function. Now how to calculate the total number of the p's? P represents the present and A represents the absent. So we are using here the COUNTIF function. See, COUNTIF B2 to AF2 is my particular range. If the cell contains P, then count it. For this purpose we are using COUNTIF. We just want to calculate the appearances of the P in the given range. So we are using the COUNTIF. Okay. COUNTIF shows us the total number of the present days. Similarly, total number of the absent days. See, we are also using the COUNTIF. Instead of P, we are writing A for absent. So COUNTIF gives us the total number of the appearance of particular event or particular word in a given range. Clear hai? Just try it by entering 1 or 2 records. No need to enter 31 days record. Just enter 1 or 2 records and try to solve it. See, the function is COUNTIF, the given range and the word you want to count. In a colon. Clear hai? Any doubt in COUNTIF? अगर कोई डाउट नहीं है तो we'll focus on count A and count blank, NPV, FV, etc. Any doubt in COUNTIF? Okay, try करके देखो. All of you please share the data by using Google Lens and try it. Copy कर लो data by using Google Lens from your phones. Please try to join before the time. Try to do it. And guys, our lab is also ready. You may come to the chapter and do practice if you want. I am available here. Let me know after your completion or share the screenshot. You may share your screen with me.
See, the formula is count if, give the specific range and the letter. Let me know after completion, or you may share the screenshot as usual in our group, so others may also have some idea, those who are absent. So please try this formula and please try to join before time. See, this is the formula, count if. Share me the screen after completion. Okay, Sukanya. बाकी लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे? Any doubt in count if? Then you may try count blanks. See, I will show you. See, count A
Count A will return us the total number of the entries which are not blank, excluding blank entries. Count A return us the total number of the entries in a particular given range, excluding blank. Blank entry नहीं लेता है. If the entry is blank, count नहीं होगा. So this is what count A does. Try it also. एक दो एंट्री ब्लैंक करके भी देखो. Suppose I delete this P, then the count A reflect it as 8 as I have deleted this one entry. Okay. Now count blank gives me the total number of the blank entries in a given specific range. अगर यहाँ पर मैंने blank कर दिया तो count blank will be 1 and count A is 8. That is total number of the entries is, it will be 8. Count blank is 1. Okay. See, it will reflect the entries. Try this also, count A and the count blank. And please share your screenshot. So others may come to know how what is going on. सब लोग अपना अपना स्क्रीनशॉट शेयर करो. If you have any issues, share it also. Today you may share your screen with me in Meet. So try these two functions also, count A and count blank. Count A will return you the total number of the non-blank entries. Count blank return you the total number of the blank entries. ओके सिर्फ 2 लोग ही शेयर कर रहे, बाकी प्लीज शेयर व्हाट इज गोइंग ऑन योर एंड. What about others? Please share your screens, or you have to come here in the chapter from next lecture onwards. Otherwise, share your screens. बाकी लोग ट्राई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? 23 persons are there and only 2 are sharing their screens. Okay, take your time. Take your time, but please do it and share your screens. Guys, no need to enter whole data. You just enter 2 or 3 days
and apply the same formula. 31 days का डेटा एंटर करने का कोई मतलब नहीं है. हो गया सबका? Guys, you have to share your screen, otherwise you have to come here and do the practice. Clear है? Okay. So we will proceed to next function. Okay, next function is NPV, that is net profit value. Now net profit value is the main accounting function. You have to enter the data and try. This is very important function from account point of view. See, the syntax is rate, value 1, value 2, etc. Now suppose 10% is the annual discount rate. 10,000 is the initial cost of investment 1 year from today. I have taken it as a minus. जितना भी मैंने इन्वेस्ट किया था वो सब लॉस हो गया, सो इट इज़ माइनस 10,000. देन 3,000 रिटर्न्स फ्रॉम द फर्स्ट ईयर में मुझे 3,000 मिला. उसके बाद 4,200, थर्ड ईयर में 6,800. सो नाउ नेट प्रॉफिट वैल्यू मीन्स so this is the function net profit value. A2 is my rate, A3 is my initial cost of investment, A4 is the return from the first year, A5 is second year, and A6 is return from the third year. So it will return me, this is my net profit value after 3 years. तो मुझे इतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा.
1188. Try it. The formula is in front of you. See, NPV into bracket A2 is rate, A3 is the initial cost, A4 is the return from the first year, A5 is the return from second year, A6 is the return from the third year. Just try to apply. You may give the range as A4 is to A6. You need to write A4, A5, comma A5, comma A6. Just give me 2 minutes. There are some disturbances. I will close the door. I will share all YouTube videos and will share you the link for each and every function. Try to do it and share me the screenshot. Thank you, Deepak, for sharing the screen. Now try it. Take your time, try it. This is the most important function to calculate the NPV. Those who are working in some account departments, mutual funds, trading, banking section, it is very important for them. Because everywhere you have to calculate net profit kitna hoga after investing your efforts. So this is very important function.
Okay, thank you. Right. Yes. You may take positive value. It is not necessary to take negative. वही बोला मैंने कि मुझे लॉस हो गया था इसलिए मैंने निगेटिव वैल्यू इंसर्ट किया. नो नीड टू टेक निगेटिव. निगेटिव कहाँ पर होता है? म्यूचुअल फंड्स होता है, ट्रेडिंग अकाउंट्स है. एट अ सर्टन सिचुएशन लॉस भी हो सकता है, तो वैल्यू शुड बी इन माइनस, राइट? नॉट नेसेसरी कि -10,000 ही चाहिए. वॉट एवर यू वॉन्ट यू में. यहाँ पे प्लस किया तो भी चलेगा. टेक एनी वैल्यू ऑफ योर ओन. मुझे एक निगेटिव कैलकुलेशन दिखाना था इसलिए मैंने माइनस लिया. समटाइम्स होता है ना जब वी आर डूइंग ट्रेडिंग. टाइम पे ज्वाइन किया करो. Okay, so this is very important function, net profit value. आप कहीं पर भी हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन सेल एनालिसिस, परचेस एनालिसिस, stock analysis, trading analysis, that time you may need this function. So any doubts in NPV? A4 to A6 you may give range. See, my second formula is, see here I am using direct range instead of giving comma. I am using A3 colon A6. A3 to A6. A2 is my discount rate and this is my investment. So I am directly using A3 to A6 instead of giving commas. Okay. So you may use this A3 colon A6. Okay, this is the second formula.
जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स है, यू मे गिव द रेंज फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स. So try this also. Clear है? Guys, in next lecture we are discussing various types of the analysis also, data analysis. That time you may require this function. Some work is going on in the adjacent class. Okay, so the next function is future value. See, this is the future value. This is the investment based on periodic. See, it returns the future value of an investment based on periodic constant payments or constant interest rate, etc. Now here rate is the interest rate. NPR means total number of periods. कितने periods है, कितना उसमें कितना EMI जाएगा वो. PMT means payment made each period. PV present value. PV का मतलब है present value on future payment. Then there are two types in the formula. My formula is rate. Rate gives me the interest rate. This is number of periods. This is payment made for each period. Number of periods and the payment made for each period. PV means the present value. PV means the present value. Type, there are two types. कि आपको FV कब चाहिए, at the end of the period चाहिए या at the beginning of the period चाहिए. So if you want at the end of the period, then you have to write 0. If you want it at the beginning of the period, then you have to write 1. Okay, let's see what exactly it does. See, this is my annual interest rate. This is my number of payments. This is my amount of payment. See, I will take 200. Then my present value is 500. Minus नहीं करती हूँ अभी. So this is my future value. If I want the payment at the beginning of the period, if I want at the end of the period, then I have to write the 0 and the value changes. See, at the end of the period it is 2581. At the beginning it is 2581. At the end of the period it is 2571. minus 10 का डिफरेंस है. How many of you are aware about the share trading or data analysis? ट्रेडिंग में एनएससी के साइट पे जो भी डेटा एनालिसिस रहता है, so how they calculate the value future payment, this is the formula. See guys, try to study the NSC site, or there are many sites. ट्रेंड एनालिसिस, डेटा एनालिसिस स्टडी कर सकते हो, या फिर चार्ट एनालिसिस, चार्ट रहते हैं डिफरेंट, उसका स्टडी कर सकते हो.
एक एनएससी का साइट है, वहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस रहता है. ओके. राइट. मेरे से ही वो वैल्यू डिलीट हो गया. So this is my formula. See, try to do it and share me the screenshot. How to calculate the future value. One day I will show you the future value analysis, trend value analysis on NSE site. NSE या फिर और अर्नो मनी रहता है. So you may study it. अर्नोमीटर नाम का एक साइट है, वहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो. हो गया. So this is the formula for how to calculate the future value. Why it is divided by 12? Because we want it as for 12 periods. That means year wise calculate करना है, तो we have to divide it by 12. FV का try करो and share me the screens. Try FV. आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे उसका फ्यूचर वैल्यू क्या रहेगा फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीरियड. सो यू हैव टू यूज FV, फ्यूचर वैल्यू. So try it please and share me the screenshots. Otherwise next time onwards you have to come here. Okay, thank you. 2266.
Why it is $3525? Convert that sale value into the rupees. Convert it into the rupees. बाकी लोगों का हो गया? Okay. Try with different values. Understand what is future value? It is the future value of our investment. Clear? Any doubts in future values? Any doubts? Let me clear it if you have any doubt in NPV, count A, count blank, count if, FV. Okay, the next, any doubt or you want to try? How to switch from dollar to rupees? Okay, I will show you. See, this is my cell, right click it. इसमें इतना ही है शायद. 1 minute, I will show you. See, this is blank workbook. This is my data or this is my cell.
फॉर्मेट सेल का ऑप्शन रहता है, राइट क्लिक इट, you will find format cell. See, format cell. Okay, format cell में यहाँ पर है नंबर, या फिर करेंसी रहती है कि करेंसी आपके यहाँ पे होगा डॉलर, उसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर दो. सी, these are number of currencies. So you have to select rupees from here. You may switch from one currency to other currencies. See, this is rupees. Or you may select this. Clear है? How to switch from dollar to rupees. Right click it, go to format cell. I will show it again. See, I have to right click it, select it, right click it, then format cell is here. Just change currency from dollar to rupees. You have to select rupees. Okay, this is how to convert the currencies. Number is also here. If you want to change the number of decimal places after certain number, just increase it. See, if you don't want any decimal places, then remove it. See, 1234.34. If you want one decimal, then it will show you as 0.0. Then see, some accounting functions are here. You will use it from here. Then date. You may change the format of the date from here. Whatever you want, you just have to select it. Then time format as well. Just select the time format from the given prescribed format. This is a list of the different time formats. Whatever you want, you have to select it. Then percentile. How many percentile do you want? If you want one decimal after the given value, then choose one. Otherwise, increase it. See, this is the sample. Then fractions. If you want fraction up to 2 digits, then select 21/25. Okay. Then scientific, decimal places will be 4. If you want to reduce it, you may. See, this is the value. Scientific value हमारे कैलसी पे भी आती थी ना. Then the text value. See, text format, the cells are created, it will contain only the text and not at all the special characters, not at all the numbers, only A to Z and capital and small. Then this is the zip code. See, if you want any type of the phone number, then select phone number. Okay, then custom.
See, these are the custom types. If you want special characters, some zeros, number formats, select it from here. Then it will also contain alignment tab. See, this is right align. If I want left. See, now this is left align. I have changed the total number of the digits, so it is 00045. Then you may wrap the text by selecting here. Suppose you have typed too much and you want to wrap it. See, now it is at the bottom of the cell. If you want to change it, then go to format cell, select center. Here also select center. Okay. Then it is exactly in the middle of the column. Clear hai? If you want at the top of the column, then again go to format cell, then select top. Then value is located at the top of the cell. Then if you want to wrap the text means suppose it is out of the scope, then I will select format cell and wrap it. Okay. So this is the wrapping of the text. Clear है? अब ये निकाला ही है तो फॉर्मेट का सभी बता देती हूँ. See, format cell में then merge cell, it will merge one or two cells or multiple cells at a time. Text direction, you may change the direction of the text. See, if it is left to right, wrapping का direction left to right गया. Now suppose I want to rotate this text, then I have to select it. Then go to format cell. See, here it is the angle by which select it, and on that basis you may rotate the text. See, तो ये एंगल में सेट हो जाएगा. अगर आपके पास स्पेस नहीं है, आपको वर्टिकल टैब देना है तो ऐसे वर्टिकल हेडिंग करना है तो जस्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड रोटेट इट. अभी मुझे नीचे चाहिए वो, तो आई विल सिलेक्ट इट लाइक दिस. ओके, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया. गॉट माई पॉइंट? बॉर्डर का वगैरह बोलना है क्या? Any doubts? See, the next part is how to give border. Then format cell. These are the fonts, font colors, etc.
format cell. So border is here. You have to select the border. If you want to do just outline, then select it. If you want inner borders, then select this also. Okay. If you want to fill the color over there, border color, just select it. तो एक ये बॉर्डर का कलर चेंज हुआ है. ओके. सी आउटलाइन रेड हो गया. सो ये बॉर्डर कलर रेड हो गया. Then if you don't want any border, you want to remove the border, then select none. All the borders were removed. Then fill color. See, this is number of colors. If you want to fill it in a cell, just select it. तो यहाँ पे fill हो जाएगा. If you want to fill some effects, then select, click on the fill effects. You may change the color whatever you want. See, अगर इसको वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल ले सकते हो, डायगोनल अप चाहिए तो डायगोनल अप क्रिएट कर सकते हो, देन डायगोनल डाउन क्रिएट कर सकते हो. दिस इज हाउ टू चेंज द कलर. आपको जो भी कलर चाहिए आप उसका कॉम्बिनेशन लेके यू मे ट्राई. See, the number of patterns are here. Suppose I want this type of the pattern, then I will select this pattern, click on OK. तो ये pattern आ गया. Okay. This is how to change the pattern. Now protection. See, I want to hide that cell, then it will hide from. If you are going to delete it, you may delete it. See, is it clear? So we will focus on our functions. Please unmute yourself, Deepali. Any doubt? Okay, then next function is the PMT. So this is it calculates the payment for the loan based on the constant payments and a constant interest rate. This is the formula. Okay, interest rate fixed है, constant है, flexible नहीं है. There are two types of the interest rate. एक fixed रहता है, एक variable रहता है. PMT जो constant interest rate है उस पे काम करता है. Okay, based on the constant payments. So now we have annual interest rate with us.
sorry, this spelling mistake is there. Interest rate, then this is the number of the months of payment, कितने months के लिए payment करना है. This is amount of the loan, then this is monthly payment for the loan. इसी पे हमारा EMI सेटल होता है, ऐसे ही कैलकुलेट होता है. We have chosen the fixed option for the loan. If we have chosen variable, then EMI change होता रहता है. Okay, so this is how to calculate the PMT. PMT A2 is our interest rate, that we have to divide it by 12, A3 and A4. A3 is my number of months of payment and A4 is the amount of the loan. Okay, so try it. These are very important accounting functions actually. Okay, try it. The PMT. A2 is my interest rate divided by 12, A3 and the A4. A3 is the number of months of payment and A4 is the amount of the loan. So calculate it and share me the screenshots. Good. हाँ, इसका फॉर्मूला क्या है? see the formula PMT A2 divided by 12 comma A3 comma A4. A2 is our annual interest rate,
A3 is the number of months of payment and A4 is the amount of the loan. और मैम नीचे वाले का हेलो, ये वाला हो गया नीचे ओके गुड. दोनों फॉर्मूला सेम है क्या? हाँ सेम है. यहाँ पर सिर्फ मैंने ये 01 दिया है. 0 इज फॉर द टाइप. See, I will explain you. 0 means at the end of the period if you want to pay all the installments, and 1 at the beginning of the period. That is the only difference in second formula. See, otherwise the formula is same. If you want to pay at the beginning, then just give 0. Otherwise, sorry, at the end then just give 0, and at the beginning 1. That means in some cases some persons want to pay the interest first at the beginning of the EMIs. उनका EMI जो जाता है उसमें से इंटरेस्ट पहले चले जाता है, बाद में प्रिंसिपल अमाउंट जाता है. एंड इन सेकेंड केस 80% इंटरेस्ट देन 20% प्रिंसिपल अमाउंट में से कट होता है, तो उसके बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट रिमेन है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है. दीज आर द टू सिचुएशंस. ओके, पर्सन ए ने लोन लिया है, ही वांट टू पे ऑल द इंटरेस्ट फर्स्ट एंड देन द प्रिंसिपल अमाउंट. पर्सन बी ने लोन लिया है, सो ही वांट टू पे बोथ एट अ टाइम. जो कोई भी EMI वो भरेगा उसमें से सम परसेंटेज विल बी इंटरेस्ट एंड सम परसेंट विल बी प्रिंसिपल अमाउंट. तो नेक्स्ट उसका जो EMI होगा उसमें वो प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाएगा. सो इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ा दिया तो भी चलेगा. अगर लोन फास्ट रिड्यूस करना है तो यू हैव टू सिलेक्ट सेकेंड, simultaneous pay of interest and the principal amount. So this is the difference at the beginning and at the end. Because अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट वैसे रहेगा तो उसका इफेक्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट ज़्यादा पे होगा. सो क्लियर है? डाउट है कोणाला काही? एनी डाउट? सो नेक्स्ट फंक्शनवर जायचं. कोणाला डाउट असेल तर आत्ताच विचारा. दीज आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फंक्शन जे तुम्हाला इन फ्युचर लाईफ और इन करंट लाईफ यू हॅव टू यूज दिस. नो ऑप्शन as all of you are accounting persons. काही डाऊट असेल, कोणती कन्सेप्ट क्लिअर नसेल, लेट मी नो राईट नाउ. So next function we will study. This is SLN. SLN means straight line depreciation. अगर कोई भी एक
या फॉर एग्जांपल टेक फर्नीचर, आपने कोई फर्नीचर ले लिया, उसको 10 ईयर्स तक यूज़ किया, तो बाद में उसका वैल्यू कम हो जाएगा, दैट इज़ द डेप्रिसिएशन कॉस्ट. सो हाउ टू कैलकुलेट दैट डेप्रिसिएशन कॉस्ट? Formula for that is SLN, straight line depreciation of an asset for a period. Formula is like this: cost, salvage means the depreciation, and the life, कितने साल हो गए वो फर्नीचर बाय करके, that is the life of that furniture, right? So यहाँ पे है cost, then 7,500 is our salvage value. C. Cost means the initial cost, आपका buying cost जो कुछ भी था. Then the value of the asset at the end of its life, that is depreciated value, that is salvage. And the life, कितने साल आपने वो यूज किया है, that is the life of that particular thing. So how to use it? See, 30,000 is my initial cost, 7,500 my salvage value, 10 years मैंने वो यूज किया है, तो depreciation कितना आएगा? C, the formula SLN, comma, the initial cost, that is 30,000, then A3 is my salvage value, and A4 is my 10 years of useful life. 10 years मैंने वो फर्नीचर यूज किया, तो उसका डेप्रिसिएशन आएगा 2,250 हर एक साल के लिए, फॉर ईच ईयर. तो 10 आफ्टर 10 ईयर्स वो आपको 7,500 या 8,000 रुपये में बेचना पड़ेगा, दैट इज 7,500, बिकॉज डेप्रिसिएशन वैल्यू इज 2,250. दैट इज योर यूजेस वैल्यू. Try to solve it and share me the screenshot. आपने दूसरे वैल्यू लिया तो भी चलेगा. यस, गुड. ट्राई विथ डिफरेंट वैल्यूज. All others? क्लियर है? ओके.
Your screenshot always encourages me. Okay, the next function. Any doubts in SLN? SLN, PMT, FV, NPV, count. Then we will proceed to sum if. Okay. Now this is our property value, the commission, and thus the data. Okay. Now here we are using the sum if. We already studied the if loop. Now we are discussing the sum if. See here, sum if A2 is to A5, it will show me the sum of the property values over 1,60,000. 1,60,000 के ऊपर ये 3 है, तो it will show me the sum of all these. 4 plus 3 is 7, 7 plus 2 is 9 lakhs. So it will show me the sum of the property values over 1,60,000. The formula is sum if A2 is to A5 is my range. A2 is to A5 is my value range. A2 से A5 तक जितनी भी वैल्यू ओवर 1,60,000 है, show it me. Show the sum of it. So now next is sum of commissions. See, sum of the commissions for the property value that is equal to 3 lakhs. प्रॉपर्टी वैल्यू 3 लाख है तो उसका कमीशन दिखाओ. करेक्ट. सो यहाँ पे फॉर्मूला है सम इफ A2 is to A5 is my range again. I want the commission for the property value 3 lakh. So, and for this my lookup data is B2 to B5. मुझे B2 to B5 में से आउटपुट चाहिए which is referred to 3 lakh. तो यहाँ पे if I want to refer to 3 lakh, it will return me the 21,000. Okay. Then my next is, पहले ये दो ट्राई करो. चलो. And share me the screenshots.
चलो जल्दी ट्राई करो and send me the screenshots. Then I will explain you the last formula. Okay, done. Then the next formula is see, sum if I want the commission for the property value 3 lakhs. I have write sum if into bracket A2 is to A5 is my range for the property values. 3 lakh is the data for which I am looking for, and I want the output from the range B2 to B5. So I have selected B2 to B5. I want to search the respective value for the 3 lakhs from the range B2 to B5. So I have select the data B2 to B5.
Okay, share me the screenshots. Okay, the next formula is I want the sum of the commission for the property values greater than the values in C2. C2 यहाँ पे 2,50,000 2,50,000 से greater values I want. Okay, greater values का commission I want. That means my property values will be 3 lakh and the 4 lakh. I want the commission. These are the two values greater than 2,50,000. I want the commission for these two values 3 lakh and the 4 lakh. That is 21,000 and the 28. I want the sum of this. So my formula is this. See. Clear hai what I want? I want the commission, sum of the commission for the property values greater than 2,50,000. So there are two values for the two which are greater than 2,50,000. That is 3 lakh and the 4 lakh. Respective commission is 21,000 and the 28,000. I want sum of these two. So my formula is my property value range is A2 to A5. Again, I want greater than C2, greater than the value in the C2. I have given the address of the cell C2, so I am using this sign to show the values in the cell C2. That is, and I am looking for the commission which is in B column, that is B2 to B5, for which I am looking for the commission. So my formula is A2 to A5 is my property value range, B2 to B5 is my commission range, in which I want the output which is greater than the value located in the cell C2. All three conditions are different. I want sum of the property values over 1,60,000 in my first case. In second case, I want the sum of the commission for the property values equal to 3 lakh. 3 lakh का commission कितना है? That I want individual record 3 lakh का. In third case, I want the sum of the commission for the property values greater than C2. Value is located at different cell. I want the sum of commission for that particular value. Okay. So I am using the formula A2 is to A5, greater than sign in the quotes, and C2, then B2 is to B5. That is the sum of the commission for property values greater than. Clear about all three cases? कोणाला डाऊट आहे काही? तिन्ही केसेस वेगवेगळे आहेत. सगळ्यांना क्लियर आहे हे?
एनी डाउट्स? इसको रिपीट करना है सुकन्या. मैम कमीशन का वापस रिपीट करो. ओके. सेकेंड वाला या थर्ड वाला केस? सी यहाँ पे आई वॉन्ट द सम ऑफ द कमीशंस फॉर द प्रॉपर्टी वैल्यू इक्वल टू 3 लाख. ये 3 लाख प्रॉपर्टी वैल्यू है. मुझे 21,000 आउटपुट चाहिए कि 3 लाख के लिए कितना कमीशन है. दैट आई वॉन्ट. ओके. सो आई एम यूजिंग अ फॉर्मूला सम इफ A2 to A5 is my property value range. This is my property value range. I am looking for the commission of this specific entry. I want the commission for 3 lakh. So I have write 3 lakh. And B2 to B5 is my commission range in which my output is located. I want 21,000 as output because 3 lakh का commission 21,000 है. So I want 21,000. Now see, so I am using a formula A2 to A5 3 lakhs, B2 to B5. यहाँ पर आप 1 लाख 2 लाख 4 लाख कुछ भी रेंज दे सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट. सेकेंड केस क्लियर है? Second case, any doubt in second case? कुछ डाउट है तो बोलो. And now for the third case, see, now concentrate on third case. This is little difficult, not actually difficult, but property value range is A2 to A5 and my looking range is B2 to B, lookup range is B2 to B5. That is constant. यहाँ पे हमने सिर्फ इतना किया है कि we have given an address for this particular cell. So I am using ampersand C2. This sign is used for giving the address of a specific location. So I am using @C2. @C2, C2 में क्या है? 2,50,000 है. मुझे इसके ऊपर जितने भी वैल्यूज है, so I am using greater than. Okay, I am using greater than sign because I want all the property values which are greater than 2,50,000. So I am using greater than sign. And C2. C2 is my cell address. I am given the address of the cell C2, so I am using ampersand. This is one of the way to show the particular or highlight the particular cell value. So value of C2 is 2,50,000. I want all the commission values, sum of all commission values greater than 2,50,000. Any doubt? Okay. और किसी को डाउट है? Now you may use voice of your laptop. मैम 21 का फॉर्मूला था. 21 का फॉर्मूला है. See, this is the formula.
ट्राई करो, यू विल टेक योर टाइम. क्लियर है सेजल? मैम ये फॉर्मूला डाला तो आंसर ही नहीं आ रहा. शेयर करो आपका स्क्रीन, हाँ? शेयर करो स्क्रीनशॉट. बाकी सबका आ रहा है? यस, ऑल अदर्स? स्क्रीनशॉट शेयर करो, नहीं तो स्क्रीन शेयर करो. आया ना 21,000. उसके बाद वाला 49 वाला किया सबने? स्क्रीनशॉट शेयर करो सेजल. सेजल है क्या? बाकी सबका आ गया ना? ऑल 3? 49 वाला भी? So this is the formula. Okay. So any doubts in all these function guys? Count, NPV, FV, PMT, SLN, SUMIF. किसी को कोई अंडरस्टैंडिंग में डाउट है? These are very very important functions, accounting functions. Okay, we will proceed further for the next one. सबका हो गया ना? Sejal, check yourself. Yes, that is also issue.
या सेंड किया? एक मिनट। करेक्ट है। A2 to A5 3 लाख कॉमा ये B2 डैश B5 किया है, रेंज चाहिए ना? यस यस मैम। B2 डैश B5 किया है आपने? मैम आपने बोला नहीं था दोनों? हाँ, ओके मैम। करके देखो। यस मैम आया। हाँ, डैश की वजह से नहीं आ रहा था। ओके, नाउ सी दिस इज न्यू फॉर्मूला गोल सिक। गोल सिक का मतलब है whenever you want to adjust something, आपको यही आउटपुट चाहिए तो कौन से इनपुट में चेंजेस करना पड़ेगा, क्या चेंजेस करना पड़ेगा? सपोज आई वांट my A column contains atom name, B column contains quantity, C column contains rate and D column contains amount. I want 6000 instead of 5000 at mouse. Okay, mouse के कॉलम में मेरा अमाउंट है 5000 वेयर आई वांट 6000, तो मुझे कुछ भी करके अमाउंट 6000 चाहिए, फॉर विच आई वांट सम चेंजेस इन आइदर कॉलम बी और आइदर कॉलम सी। यहाँ पे मेरे पास शॉर्ट डेटा है, बट वेन एवर लॉन्ग शीट्स आर देयर यू हैव टू एडजस्ट सम वैल्यूज। या अगर आपके पास कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बॉर्डर पे है, फेल हो रहा है 1-2 मार्क्स से, सो यू वांट टू इंक्रीज द मार्क्स, तो किस सब्जेक्ट में इंक्रीज करना है? दैट इज व्हाट गोल सिक। ओके, नाउ दिस आर द वैल्यूज B2 to C2। आप इनपुट कर लो सब लोग। See in data tab, what if analysis is there. We do one thing, we copy this data from Google Sheet to normal sheet. Okay. क्योंकि यहाँ पे कुछ कोई फंक्शन नहीं है। ओ ओके,
right? Now in a data tab, see, I will increase the font or size. Okay. Now in a data tab, what if analysis is there. सभी को टैब go to data tab, click on what if analysis. Then goal seek function is there. Goal seek, we have to use it to find the right input for the value we want. Now suppose this is our 1000, we want 2000 here. कुछ भी करके हमको 2000 का प्रॉफिट होना चाहिए या फिर सेल होना चाहिए. So what if goal seek, click on goal seek, set the cell D2. मुझे यहाँ पे 1000 पे वैल्यू चेंज करना है. आई वॉन्ट 2000. मुझे कुछ भी करके कीबोर्ड का सेल अमाउंट चाहिए 2000. सो आई विल सेट द वैल्यू टू 2000, राइट. पर मुझे उसके लिए क्या चेंज करना पड़ेगा, तो क्वांटिटी चेंज करना पड़ेगा. रेट तो चेंज करके नहीं होगा. आई वॉन्ट टू चेंज क्वांटिटी. रेट भी चेंज किया तो भी वैल्यू आएगा, बट आई वॉन्ट रेट्स एज सेम as 200. I want to change quantity. We will see both cases. So by changing the cell, I will select B2. Okay. I want to change the cell B2. Clear? Then I will click OK. Cell must contain a formula. अरे हमने ऐसे ही पेस्ट किया है ना. सो विल डिलीट इट. सी इट शुड बी अ फॉर्मूला. सो इक्वल टू B2 to B2 we will multiply it by C2. So it will get 1000. यही फॉर्मूला हम नीचे पुल ऑन करते हैं. Okay, now we will click on what if analysis, goal seek. We want to change the value of D2 to 2000. I want to change it to 2000 by changing the cell B2, right? Okay. Okay. See, यहाँ पे क्वांटिटी 5 था, इंस्टेड ऑफ इट 10 आ गया. सो माई अमाउंट विल बी 2000, राइट. क्या किया समझ में आया? आई वॉन्ट टू चेंज द अमाउंट, but instead of doing calculation again and again, I want to reflect these changes by changing the cell B2, right? अभी मुझे यहाँ पे चाहिए 5000 सपोज. तो मैं क्या करूँगी, what if analysis, go to goal seek. I want to change the D2 cell to the value 5000. See, I want 5000 by changing rate. Okay, now we will change the rate. So use this. Okay. Okay, change हो गया rate and my amount is also got changed. Similarly, अगर मुझे माउस चाहिए तो I will go to goal seek.
I want to change the value of cell D3 to value 3000. Less करना है. By changing the cell, I want to change the rate for this cell. Okay. So this will help you to adjust the quotations or to adjust some value of taxes. Try करो. Colseq is important function. झिरो का येते C2 ला कोट्स पाहिजे ना एम्फासाइड ला. एक मिनिट. समीप मध्ये काय चुकले. A2 to A5 पाहिजे. रेंज चुकली आहे. रेंज खूप फास्ट होत असेल तर मला सांगा. तुम्हाला हवा तेवढा वेळ घ्या पण करा. ही रेंज पाहिजे ना. तिथे A2 to A3 टाकलेली आहे. का why it is 0? स्क्रीनशॉट शेअर करा तो 0 आत्ताचा लेटेस्ट. झिरो ज्याच्यात आला तो स्क्रीनशॉट शेअर करा. तोपर्यंत बाकीच्यांनी Colseq ट्राय करा. Go to what if analysis from data tab and try it and share me the screenshots. Share me the screenshot. म्हणून इकडे घेऊन येत जा तुम्ही लॅपटॉप. माझ्या समोर करा.
Any doubts in what if analysis? एक मिनट याचं काय टेन्शन आहे. A2 to A5 बरोबर आहे. मग व्हॅल्यू काय आली 0. अरे कारण त्याच्यात व्हॅल्यूच नाही आहे. त्या C2 मध्ये व्हॅल्यू किती आहे 25 lakhs आहे. 25 lakhsच्या वरती एकही व्हॅल्यू नाही आहे प्रॉपर्टीची. त्यातला एक 0 कमी करा म्हणजे आन्सर येईल. C2 मध्ये 25 lakhs टाकले गेलेत. 25 lakhsच्या वर एकही व्हॅल्यू नाही. आपली 1 lakh 2 lakh 3 lakh 4 lakh आहे. करेक्ट. Change the value from C2. त्यामुळे 0 येणार. तो पण बरोबर आहे आणि आपणही बरोबर आहे. फॉर्म्युला इज राईट. बाकीच्यांना आलं गोल सिक करता. Guys, we will take a 5 minutes break. Okay. Then we will see in detail. थोडं माईकचे सेल बदलते मी.
Okay, let's continue. Okay. So goal 6, any doubt in goal 6? Where to use it? Any doubts? Let's continue. सबने किया गोल से ट्राई? एनी डाउट? वैल्यू एडजस्ट हो रहा है? किसी को डाउट है गोल 6 में? एटलीस्ट रिप्लाई तो करो. Anyway, we will move further for next function. Okay. Now sheet 2. Now see, these are my values. This is another table. Here also we will try some modifications as well as some auditing and the scenarios. Okay. Now see, we already discussed the goal 6. Now data tab is here. We will again copy this data to normal Excel. There are some limitations for Google Sheet. So this is my data. Got it? We'll also copy the formula as well. Edit, paste special, edit copy. यहाँ पे पेस्ट स्पेशल anyway we will copy the formula. Formula is E2 star 10 divided by 100. We'll delete it. Okay. Now here we want equal to into D2.
Okay. Now here we will calculate the commission by formula, that is E2 into okay. Now here we also write one formula, sum of that is equal to sum into bracket all these values f2 to f6. ओके तो यहाँ पे सम आ गया. नाउ वी विल डू another calculation. We'll go to data tab, what if analysis. Now we are looking for a scenario managers. Scenario manager, we will add it, give scenario name as A by changing the cell I want to change this cell. Okay. Okay. हमने ये सेल enter the values for each of the changing cell. We will enter this value as 450. Okay. Show. तो हमने ये वैल्यू चेंज किया तो यहाँ पे चेंज हो गया, डायरेक्टली बिना चेंज किए चेंज हो गया. सो राइट, नाउ वी मे चेंज द सिनेरियो. हमने अभी ये वैल्यू चेंज किया था F3 का. नाउ वी विल चेंज दिस सिनेरियो बाय चेंजिंग द वैल्यूज, एडिट इट by changing the cell. ये वाला चेंज करते हैं हम F2. ओके, सो ओके, F2 we will change it at 678. ओके, तो वैल्यू H का वैल्यू चेंज हो रहा है. So you can use this scenario manager. कहाँ पे यूज करोगे? Any idea? अगर हमने कोई कोटेशन किया है and in that quotation we want to change some values, if we want to see the output of various inputs, then such a set of input values can be prepared. This is called as a scenarios. हमको ट्रायल एंड एरर करके देखना है कि कौन सी वैल्यू इंक्रीज करके कितना चेंज हो रहा है, राइट? कोटेशन में हम यही यूज करते हैं, सिनेरियो मैनेजर्स. So for this, data tab has a data tool. It has a command, what if analysis, which has a scenario manager command. Select scenario manager command from what if analysis command, and dialog box of scenario manager is displayed on your screen. See, here it is the scenario manager. Type any name for the scenario below the heading of the scenario name in the dialog box. Click on OK button. Scenario values of dialog box is displayed on the screen. जहाँ पे हमने देखा कि ये वैल्यू चेंज की है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ. दिस इज द नेम ऑफ द सिनेरियो.
I have created. Now can edit it multiple times. No limitation. Similarly, if you want to delete the scenario, you may delete it. मुझे अभी ये सिनेरियो नहीं चाहिए, so I delete it and close it. ट्राई करके देखो and send me the screenshots की वैल्यू चेंज हो रहे. Done? Okay. डाउनलोड नहीं हो रहा है ये. बिफोर फॉर्मूला आफ्टर फॉर, हाँ हो गया. गोल सिक्का ना. ओके, गुड वन, गुड एफर्ट्स. नाउ जस्ट डू दिस scenario manager. This is very useful command actually. Use edit option to make any changes in the scenarios. The scenarios prepared are applicable to that worksheet only. उसका इफेक्ट सिर्फ वो एक वर्कशीट के लिए है. To use the scenario for other worksheet in the workbook, click merge button and then select the name of the worksheet. Okay. अगर आपको ये दूसरे वर्कशीट में भी सेम सिनेरियो यूज करना है, देन क्लिक ऑन मर्ज वर्कशीट बटन. राइट, सी आई विल गो टू व्हाट इफ एनालिसिस, देन सिनेरियो मैनेजर, add the scenario manager. I will give one name as a trial. Okay, now I want to change the cell quantity. मुझे क्वांटिटी चेंज करना है. सो ओके, इंस्टेड ऑफ 5 आई वांट 10. ओके, तो आफ्टर चेंजिंग 10 यहाँ पे चेंज हो गया कमीशन एंड ऑल दोज थिंग्स. तो ये वैल्यू भी चेंज हो गई. 35,428 हो गया. क्लियर है? एक बार फिर से बोलती हूँ. गो टू व्हाट इफ एनालिसिस, फ्रॉम डेटा टैब क्लिक ऑन डेटा टैब, गो टू व्हाट इफ एनालिसिस, देन सिनेरियो मैनेजर इज देयर, click on scenario manager, add it. Now we already have added the trial one, we will edit it. आप यहाँ से उसका नाम भी चेंज कर सकते हो. Now I want to change the mouse, quantity of mouse. Okay, so I'll select this cell and click on OK. Instead of 10 I will change it to 15. Okay, now before changing, the value of mouse commission is 450, amount is 5,000. Now it is changing. See, click on show button. Okay ma'am, I understand. हाँ, तो ये चेंज हो गया. See, we will calculate the commission, that is equal to, क्या करना है हमको, E2 इंटू, यहाँ पे इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, E2 इंटू 10 एक ब्रैकेट में लेते हैं, स्लैश now I will fetch the same formula here. Oh, Control Z.
So automatically the value changes. See, we'll repeat it. Scenario manager, then edit it. Now I want to change C3 to, instead of 15 I want 7. ओके, वैल्यू चेंज हो गए. ट्राई करो. ये एडजस्टमेंट हमको हमेशा करना पड़ता है. सबने ट्राई कर लिया? किसी को डाउट है? इन बोथ गोल सिक एज वेल एज द सिनेरियो मैनेजर. एनी डाउट्स? कोई डाउट हो तो बोलो. नो डाउट्स ना? हाँ, एनी डाउट्स? मैम अगर हम लोग वैसे भी डेट चेंज कर दें विदाउट यूजिंग सिनेरियो मैनेजर तो भी सारे कैलकुलेशंस ठीक हो जाएंगे. यस, व्हाई आर वी यूजिंग सिनेरियो मैनेजर? जस्ट टू चेक द वैल्यूज. हमको जो भी आउटपुट चाहिए वो किसी और वर्कशीट पे है. अभी मैंने सेम वर्कशीट पे लिया है, राइट? व्हेनेवर देयर आर नंबर ऑफ वर्कशीट तो आउटपुट कहीं और होगा. सपोज वी वांट टू फिल ITR फॉर्म, तो उसके लिए देयर आर नंबर ऑफ वर्कशीट्स, राइट? सो फाइनल टैक्स वैल्यू आपके लास्ट वर्कशीट पे रहेगी. सो आपको एडजस्टमेंट कहाँ करना है, दैट वी हैव टू सी. 80D में करना है, 80C में करना है, या 15G में करना है, 80G में करना है. सो अकॉर्डिंगली वी कैन डू दैट. यहाँ पे हमने अभी सिंगल प्राइमरी देखा है कि वी हैव अ some limited data and only one worksheet. Whenever there are number of worksheets and output is on different sheet, last sheet पे है या कहीं और है, there are 1000 number of entries, then we have to use this. Yes ma'am. So you are saying कि अगर हम लोग सिर्फ वैल्यू चेंज करते हैं तो that will be changed only
हाँ तो मर्ज करना है हमको एट दैट टाइम. सिनेरियो मैनेजर, राइट? या यस, थैंक यू. हमको वो वर्कशीट, अभी सपोज वी हैव शीट 1, शीट 2, शीट 3, तीनों शीट पे हमारा सेम डेटा फ्लो हो रहा है. तो वी हैव टू वर्क on all these sheets to merge it and then use scenario manager. scenario manager के लिए सिर्फ आप वर्कशीट मर्ज कर सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू लिंक द वर्कशीट. दिस इज द डिफरेंस. लिंकिंग करके भी कर सकते हो, सिनेरियो मैनेजर लेके भी वर्कशीट का डेटा चेंज कर सकते हो. अगर मेरे फर्स्ट वर्कशीट पे स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम है, सेकेंड वर्कशीट पे उसके यूनिट 1 के मार्क्स है, थर्ड वर्कशीट पे यूनिट 2 के मार्क्स है, आई वांट टू कैलकुलेट द फाइनल मार्क्स, और उसमें कोई फेल हो रहा है एक आध मार्क्स से, तो वी हैव टू एडजस्ट. Whenever we have a large data, this is primary one. In coming lectures we will work on some huge data. तो वो बोरो करके करेंगे हम डेटा. गॉट माई पॉइंट? So let's move to sheet 3. Now this is the salary sheet of month of August, suppose. Okay, now this is the basic payment. DA is 40% of the basic, HRA is 12% of the basic, then gross salary is the sum of basic plus DA plus HRA, that is gross. My PF value is 3.2% of the gross salary. I will mention here. DA is 40%, HRA is 12%, then gross salary is the sum of basic plus DA plus HRA. PF is 3.2% of gross salary. Okay, this is our formula, and net pay is gross minus PF, that is net pay, G minus P. Now we have to adjust the net payment of anybody. That time we have to use scenario manager, right? Here we have salary sheets of only 5 persons, but in some company there are 5,000 number of persons. At that time you have to adjust the net payment according to leave balance. लीव कट करना है, फ्रेशर्स के लिए कुछ अलग सिनेरियोज रहते हैं, एक्सपीरियंस के लिए अलग रहते हैं, जो ऑनशोर वर्किंग करते हैं उनके लिए अलग सिनेरियोज रहते हैं, उनका बेसिक चेंज होता है अप टू दैट पर्टिकुलर पीरियड ओनली. So that time we have to use different types of the scenarios to maintain the budget or to approve the budget of the salary. There are number of variations. जैसे कि अभी अप्रैल में हमको वेरिएबल पे मिलता है, मार्च पेड इन अप्रैल. So that time you have to adjust the column. That is based on the performance appraisal also. सो अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस अप्राइजल आपको सैलरी चेंज करना है, लेकिन आपको कंपनी का बजट भी स्टेबल रखना है. सभी का परफॉर्मेंस अप्राइजल सेम करके नहीं होता. यू हैव टू मेंटेन द बजट. दैट टाइम यू हैव टू यूज द सिनेरियो मैनेजर. गॉट माई पॉइंट? तो वो हर एक का बेसिक कैलकुलेशन करके नहीं होगा. जो भी फ्रेशर्स है, 1 ईयर एक्सपीरियंस है, उनका परफॉर्मेंस अप्राइजल 2% ही करो. जो एक्सपीरियंस है उनका 4% करो. जिन्होंने स्पेशल परफॉर्म किया है उनका कुछ अलग करो.
and see whether the budget is okay or not. बजट इंक्रीज भी नहीं करना है हमको कंपनी का, जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसमें एडजस्ट करना है वो. So that time we have to look various types of the scenario managers, as we have to adjust the values as well as the money. राइट तो ये डेटा एंटर करके देखो. आई वांट परचेज डिपार्टमेंट का सैलरी मुझे 50,000 चाहिए, तो कहाँ पे चेंज करना चाहिए. आई वांट द आउटपुट फ्रॉम यू. अगर नई बात बनी तो आई विल शो यू. जस्ट ट्राई इट. नहीं हुआ तो आई विल शो यू. ये शीट है. किसी एक का सैलरी चेंज करके दिखाओ एंड सेंड मी द स्क्रीनशॉट. किसी का भी करो, बेसिक चेंज करो, सैलरी चेंज करो, वॉट एवर यू वांट. Send me the screenshots.
last sheet with this sheet to get the salary for the month. Can we do that? How to do that? कमीशन Yes, ma'am. क्या बोलना है अपने पास उसमें कमीशन ऐड करके टोटल सैलरी. तो how to do that? तो यहाँ पे एक कॉलम ले लो एंड डॉलर का साइन लगा के वी विल ऐड दिस. सी दिस इज शीट 2 एंड $F2. That means you have to write sheet 2 and then F2. क्योंकि F2 पूरा कॉलम लेना है तो you have to add this F2 वहाँ पर शीट 3 में 4 में जहाँ पे आप चाहते हो, यहाँ पे चाहते हो ना बिफोर HRA, तो add one column here and then refer it as a sheet 2 and column number F2. यहाँ पे इंसर्ट करो. मेरे पास एक रहेगा, आई विल शो यू. नहीं, डेट में नहीं है. एंड सी किसी का क्वेरी था लास्ट टाइम कि हाउ टू ट्रेक अ ट्रांसपोज. तो ये पूरा सिलेक्ट करना है. एक मिनट, पेस्ट में रहेगा तो आई विल शो यू. See, in the paste special, transpose is here. Okay, but we have to select a cell कि हमें ट्रांसपोज कहाँ पे लेना है. अभी ये सेल लेते हैं. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल एंड देन वी विल टेक अ ट्रांसपोज ऑफ इट. तो यहाँ पे ट्रांसपोज आ गया. That means row will be converted into the columns and columns in the row. So this is how to take a transpose. यहाँ पे column wise टाइटल थे, यहाँ पे row wise हो गए. क्लियर? आपको क्या करना है, आपको ये सब सिलेक्ट करना है. देन कॉपी इट, कंट्रोल C. देन जहाँ पर भी आपको ट्रांसपोज लेना है, सपोज आई वांट ट्रांसपोज हियर, देन यहाँ पे जाके पेस्ट, क्लिक ऑन पेस्ट
test special is there and click on transpose, then OK. तो यहाँ पे ट्रांसपोज आ गया. अभी मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे डाला है कि ये क्वेरी है. एनी अदर क्वेरीज? क्लियर है हाउ टू टेक अ ट्रांसपोज? देन डिफाइन नेम करके भी आता है, डिफाइन नेम. सो यू हैव टू सिलेक्ट दिस. सी यहाँ पर भी टेक्स्ट टू कॉलम है, यू मे यूज दिस, पर ये दिस इज एप्लीकेबल टू सिंगल सेल और सिंगल कॉलम ओनली. दैट टाइम you have to select it. Now we may sort the data by using sort command. Define name कहाँ पर है इसमें? Yes, then I will show you another function. See, before that we will insert formulas here. हमने डेटा ऐसे ही कॉपी किया है तो उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं. DA is equal to what? बेसिक कितना है? D. D2 सॉरी D2 into 10 slash 100. तो ये हो गया बेसिक. और ये 40% था ना. HRA is 12%, so equal to into 12 slash 100. So now gross is equal to sum into bracket sum of all this. PF is equal to gross के ग्रॉस मतलब G2 into 3.2 slash 100. ओके, तो वही हम नीचे पुल ऑन करेंगे. राइट, नेट पे इज इक्वल टू G2 माइनस H2. Right. So now we will see auditing. This is the tab, auditing tab. Click on trace this, trace precedents. So by arrow you will get कि ये नेट पे जो है वो ग्रॉस माइनस PF है. Okay. So the formula shows you
then you may remove this array. now यहाँ पे क्लिक किया तो ट्रेस ऑन डिपेंडेंट्स, तो उसकी ग्रॉस पे क्या क्या डिपेंड है, ग्रॉस पे पीएफ डिपेंड है, ग्रॉस पे नेट पे डिपेंड है, तो इट विल शो यू द वैल्यूज और द कॉलम ऑन विच द स्पेसिफिक वैल्यू डिपेंड्स. अभी यहाँ पे ग्रॉस अगर मैंने ज़ीरो कर दिया तो पीएफ एंड नेट पे भी ज़ीरो ही आएगा, बिकॉज पीएफ एंड नेट पे बोथ डिपेंड्स अपॉन द ग्रॉस. क्लियर? Any doubts in auditing? Clear है? President. सी, अभी मैं एरो रिमूव कर देती हूँ. अभी नेट पे जो है, नेट पे मीन्स व्हाट, ग्रॉस माइनस पीएफ. तो नेट पे के लिए इनपुट क्या क्या है, ग्रॉस एंड PF. These are the inputs for net pay, right? Net pay is dependent upon gross and PF. तो precedent means net pay पे क्या क्या डिपेंड है, नेट पे के लिए हमको क्या इनपुट चाहिए, तो वो प्रेसिडेंट हमें शो करता है कि वी वांट ग्रॉस, ग्रॉस पे पीएफ डिपेंड है. सो एरो कहाँ से स्टार्ट हुआ, ग्रॉस से नेट पे तक, बिकॉज ग्रॉस इज द फर्स्ट इनपुट. ग्रॉस के 3.2% पीएफ है, सो नेक्स्ट इनपुट का डॉट कहाँ पर है, पीएफ में, एंड बोथ दीज आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नेट पे. दैट इज नेट पे इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस पीएफ, G2 माइनस H2. Got it? Yes, ma'am. Yes, So understood. ये प्रेसिडेंट है और ये डिपेंडेंट है. Now we will remove all the arrows. Now see, if I want sum here, that is equal to sum of all these net पे. नेट पे के वैल्यू क्या है, I2 to I6. ओके, तो मैंने सम कहीं और ले लिया है. आई वॉन्ट द सम ऑफ नेट पेज ऑफ ऑल द पर्सन्स, ऑल द डिपार्टमेंट्स. नाउ तो मुझे अभी इसके प्रेसिडेंट कैलकुलेट करना है. देखो, इट विल शो यू द एरो कि फॉर दैट पर्टिकुलर आउटपुट वी रिक्वायर दिस मच इनपुट, राइट? तो किधर भी रहने दो पूरे शीट में, वो एरो से आपको शो करता है कि ये इनपुट चाहिए इस आउटपुट के लिए. तो अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन रहेंगे तो इट विल हेल्प यू कि कौन सा इनपुट डिस्टर्ब करने से कौन सा आउटपुट डिस्टर्ब होगा. अगर आप न्यू है, आपको कोई फाइल डायरेक्टली हैंड ओवर किया गया है, तो वी डोंट नो ना व्हाट टाइप ऑफ कैलकुलेशन द प्रीवियस पर्सन हैज बिल्ड. कोई रेजिग्नेशन करके जाता है, फिर पूरा डेटा हमारे पास आता है. दैट टाइम वी शुड नो कि दीज आर द डिपेंडेंट वैल्यूज और दीज आर द प्रेसिडेंट्स वैल्यूज. ये फॉर्मूला कौन से इनपुट पे बेस्ड था, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाया है. दैट टाइम यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला ऑडिटिंग. या किसी और का काम आपको दिया है, हैंड ओवर किया है, एंड यू डोंट नो कि उसने क्या किया है, कौन से फॉर्मूले लगाए, किधर लगाया है, आई डोंट नो. दैट टाइम यू हैव टू डू दिस फॉर्मूला ऑडिटिंग, राइट? तो आपको सब पता चल जाता है कि इसके आगे के वैल्यू क्या है, कौन से वर्कशीट में से आए. See guys, now we are doing the calculations and formulas in only one worksheet. Now onwards we will use multiple worksheets. तो अभी ये फॉर्मूलाज क्लियर कर लो, बाद में हमको यही डिफरेंट वर्कशीट में से इनपुट लेना है और एक वर्कशीट में आउटपुट लेना है. ओके, उसके बाद
डिफरेंट फाइल में से लेना है, डिफरेंट वर्कबुक में से लेना है. One workbook is stored at D colon, one workbook is stored at C colon, one is on some text is in the Word files, so we have to import it. So अब तक कुछ डाउट है तो बोल दो, इसके बाद we will see all those things. हमको और एक माइक्रो देखना है, then we will see the data validations, conditional formatting. These are the important topics still we have to do. Clear है ये? Any doubts in formula auditing? अगर कुछ हो तो अभी बोल दो. And do practice on it. Do multiple worksheets, multiple practice, multiple assignments. अगर आप वर्किंग हो तो वहाँ से डेटा कैरी करके उसको देखो एक बार ऑडिटिंग करके. Because in the next lecture we will see the conditional formatting, micros, how to calculate from different worksheets in a same workbook. And after that we will see how to import the data from different worksheets, from Word file, from web, and then calculate on it. So अभी clear कर लो जो भी है. Then see, these are the departments: administration, purchase, sale, administration, etc. It double repeat झाले, so we will remove this. Administration, purchase, sell, store, and then we will click on define name. Click on define name. So we will give it names as department. Okay. So हमारे शीट 4 में से C2 to C6, ये C2 to C6, इसको हमने नाम दिया है डिपार्टमेंट. सो नाउ ऑनवर्ड्स नो नीड टू टेक द रेंज एट C2 to C6, यू जस्ट हैव टू कॉल डिपार्टमेंट. तो आपको रिमेंबर करने की ज़रूरत ही नहीं है कि उसका लास्ट सेल कौन सा है, व्हाट इज़ द रेंज. यू मे गिव द नेम्स टू डिफरेंट सेल्स like this. This is the basic, so define name, give it name as a basic. Okay, so now onwards you just have to calculate it as a basic. No need to carry the range as D2 to D6. Similarly DA, give it just a second. Define name. So DA. Okay, now here we want sum of DA. So you will get DH sum. यहाँ पे मैंने रेंज नहीं लिया, I have taken the name DA. Similarly, suppose I want the sum of basic, then I will call equal to sum of basic दिया था ना. बेसिक ही नाम दिया था या कुछ और दिया था? या बेसिक था, BA, ओनली फर्स्ट लेटर इज कैपिटल. बेसिक, तो ये बेसिक का सम आ गया. नो नीड टू गिव द रेंज एज D2 to D6. Okay, any doubts in define name, trace precedent, trace dependent?
डाउट हो तो बोल दो. कोई क्वेरी रख के मुझे आगे नहीं जाना है. I just want everything fundamental should be clear. अगर हमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन या माइक्रोज डिज़ाइन करने तो. एनी डाउट्स? किसी को डाउट हो तो बोल दो मुझे. गूगल मीटवर जाऊन बघायला लागतं डाऊट आहे का. कुठे गेली मीट आपली. नो डाउट्स. डाऊट नाही आहे ना कोणाला. डिफाईन नेममध्ये ट्रेस प्रेसिडेंट, रिमूव्ह एरोज, अकाउंटिंग फंक्शन्स, मॅथमॅटिकल फंक्शन्स, आपण जे पहिले फंक्शन्स पाहिले ते. Now see, if we want to use the defined names in a formula, then these are available with us. These all are defined names by us. So तुम्हाला ते पण बघायची गरज नाही. तुम्हाला तिथे दिसेल यूज इन फॉर्म्युलामध्ये की कोणते कोणते डिफाईन नेम्स वी आर यूजिंग और वी आर डिफाइंड. So directly use it from the use in formula. Okay. Any doubts? सगळ्यांनी करून पहा. डिफाईन नेम देऊन पहा. मी घाई करत नाही. अजूनही आज शिकवलेल्यातलं काही येत नसेल तर मी आत्ता परत एक्सप्लेन करते. किंवा कुठे डाऊट्स असेल, करून बघायचं असेल तर करून बघा. ट्राय इट. पण ॲटलिस्ट रिप्लाय करा की येस वी आर डुईंग, येस वी आर थिंकिंग ऑन इट. येस करतायत का पुढचं सांगू. कोणीतरी रिप्लाय करा ॲटलिस्ट. Guys, this is the first basic rule to be professional. You have to reply within the time. येस व्हॉट्सअपला तरी रिप्लाय करा.
Yes, any doubt? सगळ्यांना आलं का डिफाईन नेम? अरे काय माझा आवाज येतोय का? Am I audible? Yes. Are you done with that define name, precedents, auditing formulas, scenario manager? Any doubt? See, try to prepare ITR form. ITR form contains all functions, all formulas. We will also see how to prepare the Google Forms and how to import the data from Excel forms. But before that, any doubt in if loop, HLOOKUP, VLOOKUP, formulas? कोई भी डाउट हो तो बोल दो. How to take a transpose, define names. So that I can start with the macros and some basics of macros. कोई टॉपिक रिपीट करना है इफ लूप का, नेस्टेड इफ, मल्टीपल इफ्स? Because we have to discuss chart data validations. Okay, we will do soon some data validations or conditional formatting. यहाँ पे नहीं होगा, सिंपल एक्सेल फाइल लेके करते. ओके now see, this is also important. Print titles. Print titles means suppose we have a data for 50 to 60 rows. Then this is our first row, which we have to repeat on each and every page. So select it, do print titles, print area, ये कॉलम सभी सब पेज पे रिफ्लेक्ट होगा. ओके सो आप कितना भी डेटा ले लो, उसका फर्स्ट रो यही रहेगा, डिपार्टमेंट, बेसिक, डीए, एचआरए, ग्रॉस, पीएफ एंड नेट पे. दिस इज हाउ टू रिपीट ए स्पेसिफिक रो ऑन ईच एंड एवरी पेज. क्लियर है? प्रिंट टाइटल्स क्लियर है का? एटलीस्ट रिप्लाई तो करा. We will stop early. एक कंडिशनल फॉर्मॅटिंग फक्त दाखवते, then we will stop. Okay. Then formulas also we discussed. Pivot chart. Yeah, this is also important thing that we will discuss by tomorrow.
pivot chart conditional format. See, this is conditional formatting. Now we will select it, select the data and do conditional formatting. See, we may apply the color scale for the specific values. See, then we may define new rule. New rule is we have to use two color scale from lowest value to highest value. Our color will be this. Okay. तो जो लोएस्ट वैल्यू रहेगी उसका डार्क रेड आया, जो नॉर्मल वैल्यू रहेगी उसका डिफरेंट आया. सो वी अगेन डिफाइन मैनेज द रूल्स. सो हमको वो रूल मैनेज करना है. ये रेंज हमें इतना ही देना है. ओके, देन अप्लाइड. तो सिर्फ वही रो के लिए शेडिंग चेंज हो गया, राइट, फ्रॉम लोअर टू हायर. सी दिस इज लोअर वैल्यू, उसके बाद 2400 है, उसके बाद 2600 है. तो यहाँ से डार्क स्टार्ट हुआ, यहाँ पर फेंट हो गया. सो दिस इज हाउ टू डू कलर कंडीशनल फॉर्मेटिंग. Then clear the rules. Clear rules from selected cells. तो सभी रूल क्लियर हो गए. You may format this table by selecting this. तो ये टेबल ऐसे फॉर्मेट हो गया. ओके, बाय फिल्टरिंग और बाय यूजिंग डेटा बार्स. You may change the cell style. See, सेल स्टाइल भी जैसे चाहिए वैसे चेंज कर सकते हैं. अभी मुझे ये सेल स्टाइल चेंज करना है तो आई विल यूज दिस अपीयरेंस टू दिस सेल. सो यहाँ से हम फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, सेल का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं. वार्निंग टेस्ट, इफ यू वांट वार्निंग टेस्ट देन यूज दिस स्टाइल. दीज आर डिफरेंट सेल स्टाइल्स. You may define new style from here. You may change font, border, fill. Fill means the inside color etc. उसको fill नहीं करना है तो मत करो. So this is how to change the type of the cell. Any doubt? क्लियर है ना? ओके. So we will stop here today. I will give you some assignments. Just try on it for define values and etc. Then tomorrow we will discuss calculation between the sheets, some word, how to import the files from the words, customize views, conditional formatting, macros, etc. Any doubt for today's session? किसी को if, nested if, multiple if, VLOOKUP, HLOOKUP एक्सप्लेन करना है तो अभी कर देती हूँ. Please let me know. If anybody wants, जो आज जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, nobody wants. वेरी गुड. मुझे पर्सनल मैसेज किया तो भी चलेगा. आई विल रिपीट इट.
किसी को नहीं चाहिए रिपीटिशन? ऑल टॉपिक्स आर क्लियर टू यू? Simply nobody wants any type of repetition. Very good. किसी को कुछ भी डाउट है तो let me clear now, because tomorrow we are discussing some important topics. Any doubt in concatenate, indirect, large, match? How to protect or prepare this? Child list, master list, is NA. Very good. No one has any doubt. Okay, I will give you some assignments for the examinations. So we will stop here today. Okay. Those who want to repeat the topic, they can only stop here, otherwise leave the call. Anybody wants repetition for any topic? कुछ ट्राई करके देखना है तो वो भी बोलो. If you have query, you may come up with your queries. Any queries?
ओके ठीक है, यू मे लीव द कॉल. Just wait, I will take attendance.